and the second one from the chapter 3, that is bending stress. Now, as per the last lecture which we discussed about bending equation, and we derived one formula for bending. So anybody remembers that formula? Can anybody give me what was the formula which you derived? Anyone here? Okay, no. So let me start directly. So as you can see, there is a question given. The question says a cast iron beam with T cross section. You can see the cross section is already given. A cast iron beam with T cross section is shown in figure. It is simply supported over a span of 8 meters. The beam was simply supported over a span of 8 meters. For example, if I draw the beam here, so it was simply supported means it is supported at two ends. Let's say AB is the beam, okay, and 8 meters is the span. So the length of the span is 8 meters, and it carries a UDL of 1.5 kilonewton per meter on the top of it. So we have a continuous UDL starting from point A to point B, and the intensity of UDL is given to us. The W value is 1.5 kilonewton per meter. Okay, and there will be reactions here, RA and RB. So as you know, UDL wala problem we have already solved, and in UDL we know the SFD BMD how it comes, and we know the BMD is going to be, the bending moment is going to be maximum at the central point, because the loading ka jo maximum strength hai, that the maximum value of loading will be at the center point. Therefore, if you draw directly the BMD, if you remember, I have asked you to remember some things regarding standard practices, because a simply supported beam with the entire UDL is a standard form where we have direct formula to calculate the maximum bending moment, and I have already proved this formula. So the maximum bending moment at the central point, okay, so M maximum I'll call it as, and the formula for M maximum, this is BMD. Anybody remembers this formula? Maximum bending moment, how much it was? So it is given by WL square by 8, right? It was given by WL square by 8, if you remember. So, and if you want, you can solve it accordingly. SFD BMD, we have already discussed that. So here, once you know this formula, you can directly use, no need to prove that how it comes WL square by 8. So we know the values of W. W is 1.5, L is 8, so 8 square and divided by 8. So if you cancel out 8, how much it will be? 1.5 multiplied by 8 is 12 kilonewton meter. But if you remember the formula which we use, there we require the value of bending moment in Newton millimeter. So therefore I need to convert. So kilo is 10 raised to 3 and meter is also 10 raised to 3. So I will write down this as into 10 raised to 6 Newton millimeters. This is what I have converted. Now I want to find out the stresses, maximum tensile and maximum compressive stresses for what? Maximum tensile and maximum compressive stresses for this particular bending moment. Okay. Now which kind of bending moment it will be? ये कौन से type का bending moment होगा? Either it will be a sagging or hogging. Yes. Hogging. Who's this? Rohit. Come up, you can answer. The more you will answer, you will get the confidence to answer in even in Vivas or anything. Yes, who is saying this? Hogging or sagging? Nobody? Sir, sagging होगा ना? Okay, good. Sagging it is. Simply sagging. Those who are typing in the chat box, I'll request them to come up and speak up, because मुझे पता चलेगा who is speaking. Okay, so let's continue. Sagging is correct because we know the vertical beam ऐसा है, simply supported, and if I'm giving the load from here, it is going to bend in the downward direction. So ऐसे कटोरी बनेगा ना, so that is sagging. उल्टा कटोरी बनता है तो we call it as hogging in a simple or a common language which I can say. So sagging means this way, and hogging is the ulta katora. Okay, so let us now understand the sagging bending moment is positive. So I'm calling this as the bending moment is sagging way. Now when we know that the bending moment is sagging, the upper fibers of the beam will be in compression and the lower fibers of the beam will be in tension. That means there will be some tensile stress at this plate and there will be compressive stress at the upper fibers of this cross section. But the cross section now is a T section. Okay, now what we require, what else we require? Bending moment we know. Now what else we require?
we require the how much resistance inertia of this particular cross section, because we know that the bending stress is inversely proportional to the inertia of the section. If your section is giving more and more opposition to bend, then the stress will be less. So therefore I need to find out how much is the inertia of this particular section. Now to find out inertia about the neutral axis, I'll have to find out the centroid of this particular T section. So can you help me out? Okay, I will choose one of the two participant and he will guide me to. Okay, acha, we'll start from the McBCR Om. He was not there last time. Yes, Om, come up please. आज भी नहीं है. Where is he? सर है वो, उसका माइक खराब है, उसका घर पे पानी चले गया था, बारिश हुई थी ना अभी कल. Okay, fine. तो उसके माइक में पानी चला गया. अच्छा, okay, next slide. So can we start with make A? अपना Shambhavi can come up and tell me what do you understand by how to calculate. Yes, Shambhavi, are you there? No. Okay. Is there anyone who would like to come voluntarily? Yeah. Yes, sir. Tell me what to write. So y bar is known. I want to find out y bar. I am assuming this as the origin. ठीक है, अभी मेरे पास दो sections है ना यहाँ पे. So let me. Yes, sir. This is first, let's say second section, and this is first This is the rectangle. first section. तो ये first rectangle का इधर आएगा कहीं पे तो, और इसका इधर आएगा, right ना? So the first का area हो जाएगा 80 into 20. Okay. 80 into 20 is the A1. So and 80 Y1 multiplied by 20 into Y1 is Y1 is 40 good, plus 100 into 20 yes 100 into 20 into yes 90. very good 90. As you can see for the others this will be at 10, but we are counting from here. So ये जो है total 80 है ना, so this 80 plus 10 will be 90, and then you have to just divide by A1 and A2. So it is 80 into 20, which is A1, plus 100 into 20, 100 which is into 20. give me the answer in mm. Just 1 minute, I have to calculate. Okay. 67.77. 64 and 64000 plus 18. So it will be 2,400, 2,44,000. इतना कैसे आएगा? 67.77. 67.77. 67.77. I'll just calculate. Sorry, sir. 67.77 mm. So you can see here from bottom somewhere here we will get the G location, right? So let us call this as the centroid, and an axis, horizontal axis passing through this will be called as what? What will be this axis? Neutral axis. Yes, I sir. axis. Neutral axis. Yeah, very good. Neutral axis. So now we know the neutral axis, and I want to find out the inertia about neutral axis. So I will call out this is inertia about the neutral axis INA, or it is IXX, whatever the thing you can. अभी इसको inertia कैसे calculate करेंगे? Yes. How will you calculate inertia? Inertia about the center axis plus the MD square. हाँ, तो अभी if you take this particular cross, this one first rectangle, तो ये first rectangle का dimension कितना है? 20 into 80, but इसका जो x axis है वो यहाँ पे है, first rectangle का, right? Centroid वाला. तो वो axis किसको perpendicular? 80 को. तो I will write down it is 20 multiplied by 80 cube 80 का cube. 12. ठीक है? But this won't give me what? This won't give me the inertia about this neutral axis. It will give me inertia about this x axis, right? I want to shift it. ये distance कितना है? Plus of So plus 27. area is 20 MD into 80, and if you remember this distance, ये distance होगा कितना? 67.77. तो ये जो है हमारा हमने जो calculate 27. किया y bar, which is 67.77, ठीक है?
-40. वैसे -40 करना पड़ेगा. So that is 67.77 minus 40 the whole square. ठीक है. And this is my inertia of what? The first rectangle plus the inertia of the Second rectangle. second rectangle. अभी इसके लिए dimensions क्या है? इसके लिए हमारा एक्सिस इधर होना चाहिए. उसको वो किसको परपेंडिकुलर Perpendicular is 20. 20 है. So I will write down 100 into 20 cube. multiply by 20 cube by 12 plus 100 into 20 is the area into उसका डिस्टेंस कितना है? तो उसका डिस्टेंस देखो अभी 90. ये पोजीशन कहाँ पे था? 90 पे था. हमें चाहिए 67. -67. हाँ, very good. So it is 90 minus 67.7. 23.33. Now give me the entire calculation in meter raised to 4. Yes. $394.41. 394. हाँ 394.41 into 10 raised to 4. 394. Can I write 3.94? हाँ तो into 10 raised to 6 जाएगा. Is it correct? Yes, sir. Okay. So many are saying it is correct. Okay, fine. Now let's continue. So now we know the inertia. We know the this one. And now see here, neutral axis से यहाँ पे सबसे maximum distance कितना है? तो अभी देखो. Now we have compressive and tensile distances अलग-अलग है. Right ना? Yes or no? Compression and tensile वाले distances we have different distances now. Yes. So let me write show it with a different color. Yeah. So as you can see, this particular distance and this particular distance, they are totally different. This distance I will be calling it as YT maximum. Why YT maximum? Because it's a distance for tensile stress and that is maximum coming out to be 67.77 mm, right? And this particular distance will be YC maximum for compression. How much it will be this? 100 minus that, na? 33. 100 है तो 100 minus 67.77 how much? 33.23. Okay, 33.23 mm. Okay, understood this? Okay, now let's continue. Let us calculate now the maximum stresses. Let's now calculate the maximum stresses. So I know the inertia, I know everything other thing. So by using bending equation which you have derived, so what we can write down? So Sigma by y is equals to mx upon ix. For sigma c maximum, for maximum, I'm calling the maximum compressive stress. So sigma c maximum क्या formula क्या हो जाएगा? It will be m maximum bending moment which I have calculated upon I about neutral axis into y c maximum, right? So what is sigma c maximum? Sorry, m maximum is how much? The value we have calculated as 12 into 10 raised to 33.23. no, 12 अरे moment. Moment. अच्छा, you are giving me the answer. Okay, fine, absolutely. Answer is 101.10. Okay. Let me write down. YC maximum is 33.23. Sir, YC maximum is 32.23. 32. Yes. Sir. Yes, 32 of course, 67 है. Yes, there is some correction. 32.23. Okay. Next. So how much it will be? 98.06. 98.06 MPa, right ना? Directly हम लोग लिख सकते हैं. And इसको positive लिखेंगे. Sigma C लिखा है. Now for sigma T maximum. What is the formula? Sigma T maximum is equal to M maximum upon I about neutral axis into YT max. YT maximum. How much? Same way, 12 into 10 raised to 6 divided by 3.94 into 10 raised to 6 into 67.77. Yes, how much? 206.19. 206.19 is, let's say 206.2 MPa. Okay. So is my answered, the question is ended here or something is left out? Just check what is asked and what we have calculated. Sir, Yes, sir. the sign for the maximum compression and tensile. The time. Sign. Sign, okay.
No, here no need to write down sign because we have already mentioned the nature. We have written compressive है क्या tensile है. We have already mentioned ना. I'm not writing only sigma. So that is fine. If you want, you can give the sign. If you don't want, we have already mentioned. What is left out is the bending stress distribution. What is left out is what? The bending stress distribution. Okay, so whether it is asked on the exam or not, you have to draw it across the cross section. So we know that across the cross section of bending stress distribution कैसे करेंगे? तो ये मेरा cross section है. इसका maximum fibers मैं draw कर लेता हूँ यहाँ पे, right? Just a minute. Hello. Yeah. So now here we can draw the variation. You can see compressive stress positive होता है, तो वो 98 है. So I will, Disable all firewall antivirus in your device. Hello. हाँ सारा तू तुमने ये किया क्या क्या बोलते हैं EFH को डाउनलोड? ये आकाश चंद्र पांडे कौन है? सर मैक भी क्या गलती से हो गया, उसको कॉल आया रहेगा ना इसलिए. ठीक है. ओके. ये गलती रजिस्टर हो जाती है ना, हमारा वीडियो ऑन है ना. ओके. सो लेट. हाँ, तो अभी क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे हम लोग. यहाँ पे कितना वैल्यू है उसका? 98. सो लेट मी ड्रॉ द वैल्यू इज 98. सो यहाँ पे अज्यूम कर दे कि ये 98 पॉइंट हाउ मच 0.06. ओके. एंड यहाँ पे ये लेवल पे टेंसाइल स्ट्रेस है हाउ मच 202. तो ऑलमोस्ट देखो डबल है. सो लेट मी ड्रॉ अप टू हियर. प्रोपोर्शनेट ड्रॉ करने का है, बाकी कुछ नहीं. 206.2. 206.2. And then what you have to do is you have to join this by a straight line. Sorry. Okay. Ignore the earlier one. This is the straight line. This is how you can draw. So you can give the bending stress, and if you want, you can say that कि ये direction इधर है, मतलब ये positive है, compressive है, and ये direction ऐसा है, मतलब ये negative है. So this is the bending stress distribution, and whether they ask it or whether they don't ask it in exam problem, if it is written or not, you have to draw this. Okay, understood? Any doubt? So this is what we have done. Now let us go to the some more problems to understand it in a better way, and in this coming problems, you some of you can help me out. Okay, so let's go to the next one. So now the question is, now this is a quite new problem. Find the width. Now we have a, you can see the problem is find the width and the depth. Find the width and the depth of the strongest beam that can be cut off. पहले उठ के सीधा जंप का मेरे को मत सिखा. उठ के पहले सीधा सुअर वाला. हम पार्टी भी किया. हर दिन पार्टी आ रही. Okay. Find the width and the depth of the strongest beam that can be cut off a cylindrical log of wood whose diameter is 500 mm. So मतलब क्या है हमारे पास? एक 500 mm का wooden log है. Log means wooden cylindrical shape का wooden उसको log बोलते हैं. तो ये cylindrical shape का wood मैंने कट करके लाया है. उसमें से मुझे एक beam बनाना है जो rectangular beam होना चाहिए. उसका width और depth कितना होना चाहिए? So that it should be strongest enough. मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग कितना मैं ले सकता हूँ बीम, वो मुझे चाहिए. समझा क्या क्वेश्चन? समझा क्या मैंने क्या बोला? यस और नो? वी हैव अ सिलिंड्रिकल शेप का ऐसा वुड है. ये मेरा वुडन लॉग है. ठीक है, दिस इज वुडन लॉग. अभी इसको कट करके मुझे क्या चाहिए? ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का बीम चाहिए. समझ रहे हैं ना? खुद तो कट करना पड़ेगा ना रेक्टेंगुलर शेप के लिए. बाकी का ये सब मटेरियल में रिमूव कर दूंगा, राइट? ठीक है, दिस इज द मटेरियल व्हिच आई एम गोइंग टू रिमूव. So to have the maximum strongest the beam, what should be the depth and what should be the breadth if I know the diameter of the log as 500 mm? So how to do it? कैसे करेंगे? Now on which parameter the strength of the log or the bending strength of the log will depend? On which parameter it will depend? Now you know the bending equation. Bending equation चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे sigma by y equal to m by I. So on which parameters your क्या कौन से पैरामीटर को मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है to get the maximum strongest beam possible out of this particular 500 log wooden parameter? Yes, can anybody let me know? Yes or no?
So you can see here, this is a wooden log. This is a cross section of wooden log. And this is the cross section of the rectangular beam which we are considering. Let us name that rectangular cross section as ABCD. Let us name that rectangular cross section as ABCD. A, B, C and D. So you can see that कि ये जो CD part है वो क्या रहेगा? ये CD part जो है वो क्या रहेगा? The breadth we can say and the depth will be BC. इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि ये जो है वो मेरा क्या है? बेस है और ये AB जो लिखा है मैंने यहाँ पे वो क्या है? डेप्थ है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो मैंने लिया है. तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट मी ड्रॉ. अभी मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स है B और D, बट आई वांट टू फाइंड आउट अ कॉमन पैरामीटर इन बिटवीन. ये दोनों के बीच में कॉमन कुछ चाहिए, क्योंकि जितना जैसे मैं ब्रेड्थ कम करूंगा डेप्थ भी कम होने वाला है. सो देयरफॉर दे आर गोइंग टू रिलेट, विल हैव रिलेशन, बिकॉज ये पूरा सर्कुलर है जिसमें से मैं कट कर रहा हूँ. सो लेट अस हैव अ सिंगल पैरामीटर इक्वेशन. So for that what I am doing, let's say this is the center of the circle, and if I join this particular line OB, अगर मैं join करता हूँ and इसका horizontal के साथ angle assume करता हूँ थीटा. क्या किया मैंने? horizontal के साथ angle assume किया थीटा. ओके, सो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना. देखो इधर एक परपेंडिकुलर है ये, सो एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है. लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट M and let us call this as point N. ओके, or else ये n point की जरूरत भी नहीं है. M point will do the purpose. So in this triangle, what is this? ये CV जो है वो radius है. Can I write it as diameter by 2? So मैं उसको diameter by 2 लिख सकता हूँ. Now in this triangle, what I can write? See here, in triangle BCM, in this triangle, can I use sin theta? How much is sin theta? Sin is opposite upon hypotenuse. Opposite is BM and hypotenuse is D by 2. Right? So what is BM? What is BM? It is D by 2 sin theta. Okay, what is cos theta in the same triangle? Adjacent upon hypotenuse. What is adjacent side? Is CM. Upon the hypotenuse is again D by 2. So therefore my CM comes out to be D by 2 cos theta. Now see here, I know these values. ये value कितना आया CM का? D by 2 cos theta. तो ये भी कितना रहेगा? D by 2 cos theta. ये vertical side कितना आया? D by 2 sin theta. ये भी कितना रहेगा? D by 2 sin theta. So do we got अच्छा ये D मैंने कॉमन लिखा क्या? कैपिटल D कर देता हूँ इसको, just to get capital D is the diameter and small d is my depth. Let us have the separation between all of them. So let us say this is capital D, here also capital D. Okay, now so what is my breadth of the beam? You can see the breadth of the beam is 2 times this. So d by 2 cos theta plus d by 2 cos theta will be d cos theta. And what is my depth of the beam? It is capital D sin theta. So now we have both my breadth and depth into a single parameter theta. I want to find out the maximum value of theta such that my strength of the beam will be maximum. Now you can see the formula. ठीक है, अगर ये formula को मुझे क्या चाहिए? Sigma is equal to M by I into Y. Now ये Y को अगर मैं यहाँ पे divide करता हूँ, what I'll get? I by Y. What is I by Y called as? Yes, anyone here who knows what is I by Y called as? Yes, Saurabh. Section modulus. Z. Very good. It is not a section modulus. So section modulus को मैं लिख सकता हूँ Z. Yeah. Now see here. अभी मेरे जो फॉर्मूला में 3 पैरामीटर्स है, एक Z, सिग्मा, मोमेंट एंड Z. अभी ये जो भी बीम है, whether I am finding out the maximum strongest beam find करना है मुझे, right? उसका dimensions. तो मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट बीम के लिए मैं पर्टिकुलर मोमेंट ही अप्लाई करूंगा ना. ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मतलब जो मोमेंट है वो मेरा फिक्स्ड रहेगा. ओके, सिग्मा इज द स्ट्रेस व्हिच इज द रिजल्टेंट. तो मेरा सिग्मा कम कब आएगा? जब मेरा सेक्शन मॉडुलस क्या रहेगा? व्हेन माय सेक्शन मॉडुलस विल बी Great. maximum. Are you understanding? If my section modulus is maximum, my sigma will be less. So that means to have the strongest beam,
what I need to do is I need to maximize the Z, that is section modulus. And understanding it, so let me write down that comment over here. Okay, to have maximum bending strength, sorry, to have the maximum bending strength, yeah, what Z should be maximized. Z should be maximized, right? Z should be maximized. How will we maximize Z? पहले तो Z क्या है वो पता करते हैं. What is my Z? Z is I by Y. What is the inertia of this rectangular cross section? Inertia क्या आता है rectangular cross section का? About neutral axis. Neutral axis तो तुम्हारा ये होगा, right? ये होगा ना neutral axis. BD cube by 12. So it is BD cube by 12. BD cube by 12 divided by what is Y maximum? Y maximum is this, na? So what is Y here? D by 2. So let us substitute D by 2. If you solve this, you will get BD square by 6. That is my Z. So मुझे ये Z को क्या करना है? Maximize करना है. ठीक है. But ये भी क्या करते हैं? ये Z को मैं B और D का values मुझे थीटा के terms में पता है. Let us substitute that. So what I am getting B as, the B is capital D cos theta into capital D sin theta the whole square divided by 6. So it will be D cube cos theta sin square theta divided by 6. Right? Understood? Now, for Z to be maximum, everybody knows the maxima minima concept. For any function to be maximum, the derivative of that function with the variable should be what? 0. बराबर है. अभी मुझे मैथ नहीं आता है, तुमको आता रहेगा because you are studying mathematics. Yes, is it correct or not? Yes. आगे का पार्ट मुझे बताना पड़ेगा. I don't know how to differentiate it. So tell me how to differentiate now. इधर गए सब भाग जाते हैं. When I'm asking you the question, everybody make sure that कि उनका mic mute हो. And when I am speaking something, somebody else तो रहता ही है कोई ना कोई बोलने वाला. Yes. Who would like to come up? Just a derivative. I'm not asking anything much from your mathematics. If nobody comes, yes, Yes, sir. Tell me. Yes, sir. कैसे करेगा differentiate? Sir, minus d raised to d cube sin Let cube us first theta write down upon d. 6. हाँ, अच्छा d cube मैं पहले लिख देता हूँ. Cos theta into sin square theta है ना? Yes, sir. Equal to 0. तो ये By d cube by 6 6 तो निकल जाएगा, right? वो d cube by 6 कॉमन है, sir. इधर निकल जाएगा. तो shall I write ये सब निकाल ही देता हूँ, खाली इतना ही रखता हूँ. Yes, sir. Yes, okay. Tell me now how to do it. Minus sin cube theta plus 2 cos square theta sin theta. अच्छा, whether you are calling this as u or this as v. u into v है ना ये? Yes, sir. हाँ, तो Yes, पहले sir. क्या करेंगे? So you. हाँ, u cos theta. अच्छा, Anubhav Singh is raising the hand. Yes, Anubhav, you right to answer. Cos theta. No. Cos theta into derivative of sin square क्या आएगा? 2 sin theta cos theta. Yeah, very good. So it is sin square है, so it is 2 sin theta and derivative of Cos sin theta. is again cos, Cos theta. right? Plus plus sin square sin minus square sin theta square theta Sir, minus derivative sin of cube this theta minus sin minus cube. sin theta. Derivative of cos is minus sin, right? Is equal to 0. Yes. So let's simplify this. क्या हो जाएगा? 2 sin theta cos Cos square square theta theta. minus sin Minus sin cube theta. sin Theta by theta. 45. हाँ, अभी इसमें से क्या हो जाएगा? sin theta कॉमन ले क्या? बचेगा क्या? cos 2 square cos square theta theta. minus sin Theta goes to Okay, 0. so either sin theta can be 0
or this 2 cos square theta minus sin square theta can be 0, right ना? अभी ये तो कंडीशन हो ही नहीं सकता, थीटा 0 बोल रहा है वो, थीटा 0 आई कैन नॉट हैव, दिस इज एब्सर्ड आंसर फॉर मी. sin theta 0 मतलब sin 0 is 0, right? So tan theta equal to root 2. So 2 cos square theta will be equal to sin square theta, and that will give me how much? Tan square theta equal to 2 is equal to 1 by 2, na? Oh, sorry, tan square theta is 2. 2. Tan square theta is 2. Can you get the theta value? So theta is tan inverse of root 2. Yes. And how much is that? 0.95. 0. Theta का value 0.95. no sir 54.735 है 54.735 वो रेडियन बोला. डिग्री. हाँ मैं रेडियन में अच्छा ठीक है, ओके फाइन, बट डिग्रीज में क्योंकि हमें cos साइन निकालना है. हाँ, नाउ कैन यू गेट द वैल्यूज ऑफ b and d? Once you know theta for the maximum condition, now you can simply find out the values for b and d. So therefore this section b will be how much? B will be capital D cos theta. What is capital D? 500 mm 500 into cos of 54.33. ठीक है, and D is equal to capital D sin theta. Just give me the answers. 288.675 b 288.67 mm, and the other one is 408.22 408.22. So did you understand this problem कि कैसे हमने किया है? So every problem they will not ask you to find out stress and everything. The problems can be can vary according to this application कैसा required है. Okay. Now let's go to the next one. Okay. Now we have a particular section. See here, what the question says: the cross section of a cast iron machine element is a cast iron machine element which is used as a beam, but वो beam का cross section is given, but the cross section is not uniform. It is as per the requirement उसको manufacture किया है. So the dimensions are given. The beam resists bending moment about horizontal neutral axis. मतलब इसका horizontal neutral axis होगा and bending moment आ रहा है horizontal neutral axis पे. The permissible stresses in tension and compression are given. The permissible stresses in tension and compression are given to. What is the permissible stress in tension? It is 25, and in compression it is 90. Compression में tension 90 आएगा तो चलेगा, and 25 90 मतलब ये value का ये you know that कि permissible stresses मतलब क्या होता है, right? We have solved this kind of problems in problem 1. When we are saying it is permissible, just a minute, I'm getting a call from college. Wait a minute. Fine. So let us continue. Cross section is given, and you have to find out the calculate the moment of resistance to sections for both positive and negative bending moments. मतलब we have to solve this problem twice. Understanding it? Twice means what? Positive के लिए भी solve करना, negative के लिए. Means when the beam will undergo sagging bending moment and hogging bending moment. Sagging means ऐसा bend होगा, hogging means उल्टा bend होगा. उसमें क्या compression and tension का positions change हो जाता है, and because of that the values will also change. So let us do it. How to do it now? The question is how to do it. The very first thing what we will require is, in this kind of bending cases or a problems, the very first thing what we require is the position of neutral axis and the inertia about neutral axis. So can you tell me what will be the, where will be the neutral axis here? Yes, anyone? Sir, in the center of the But this is not symmetric. It's not symmetric. Okay. So we'll have to find out. we'll have to find symmetric है क्या? तो यहाँ पे देखो ना, ये distance 50 है. no sir हाँ, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? We'll have to find out the first y bar. It is symmetric about this vertical axis पे symmetric है, देखो ये 25 ये भी 25, but it's not symmetric on horizontal axis. So therefore I'll have to find out the y bar, exact y bar, right? So let us call that कि ये जो bigger section है, ठीक है? Bigger rectangle को मैं 1 बोल देता हूँ and the smaller rectangle उसको 2 बोल देता हूँ, ठीक है? So now let me find out the y bar. So how will I find out y bar?
So y bar is a1 y1. यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा. Why minus? Because we are subtracting the section there. So a2 y2 divided by a1 minus a2. Everybody must have understood this. Why we are doing subtraction. So a1 is the area of bigger rectangle. It is 100 cross 150. So I am writing 100 cross 150 into उसका y1. अभी उसका y है 150. उसका half आएगा 75. So I am writing 75 minus a2. A2 is the smaller one, has width as 50 and the height as 75. So I will write down this as 50 multiplied by 75 and उसका y कहाँ पे आएगा? Now this is important. See here. इसका y कहाँ पे आएगा? इधर आएगा. ये 75 का हाफ होता है 37.5. बट इसमें ये क्या करना पड़ेगा? 50 ऐड करना पड़ेगा. You are understanding it? So 37.5 तो ऑलरेडी है इसका हाफ, प्लस उसको मैं नीचे से काउंट कर रहा हूँ तो प्लस 50 ऐड करना पड़ेगा. Getting it? अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया तो you will get a wrong answer. This is 100 multiplied by 150 minus the 50 multiplied by 75. Now give me the answer for this. Yeah. 70.83. 70.83. Okay. So I got somewhere 70.83. ठीक है. So somewhere here. मतलब मुझे जो सेंट्रॉइड मिलेगा वो somewhere यहाँ पे मिलेगा. Let me draw G and उसमें से जाने वाला एक्सिस क्या होगा? मेरा न्यूट्रल एक्सिस. ये है मेरा न्यूट्रल एक्सिस. Okay, this is my neutral axis. So now I'll have to find out the inertia about neutral axis. Alright. So how will I find out inertia about neutral axis? Yes. Let's calculate now. Inertia about neutral axis. Inertia में क्या पहले बड़ा rectangle का लिखते हैं. बड़ा rectangle कितने size का है? तो it is neutral axis is perpendicular to 150 dimension. So I will write down 100 multiplied by 150 cube by 12. Right? इसमें ऐड करना पड़ेगा. क्या ऐड करना पड़ेगा? तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 150 एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर. सी हियर, अगर ये मेरा बड़ा रेक्टेंगल है उसका सेंट्रॉइड आएगा कितना? 150 का हाफ आता है 75 पे. बट नाउ माय न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट वेयर, एट व्हाट डिस्टेंस? माय न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट ओनली 70.83 डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम एंड फ्रॉम टॉप साइड इट इज हाउ मच? 150 में से 70 गया कितना होगा? बताओ. 80. तो ये 79.13 होगा ना? 79.17. 7.1. ओके. तो ये डिस्टेंस अलग है. अभी मेरा एक्चुअल सी जो है शिफ्ट करना पड़ेगा ना. तो उसका पहले का देखो, पहले का y कितना था? 75. अभी कितना है? 70. तो आई हैव टू शिफ्ट. तो इट इज 75 minus 70.83 द होल स्क्वायर. ठीक है. प्लस सॉरी माइनस, इनर्शिया भी माइनस करना पड़ेगा बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर रेक्टेंगल. तो स्मॉलर रेक्टेंगल का डायमेंशन है 50 मल्टीप्लाई बाय 75 क्यूब बाय 12 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 75. इधर भी सेम चीज करना पड़ेगा. इधर क्या है? अभी ये जो स्मॉलर रेक्टेंगल है, ये स्मॉलर रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे था पहले? तो पहले का सेंट्रॉइड उसका इधर था. देखो 37.5 प्लस 50 लिखा था ना मैंने. इट इज 87.5. बट अभी कहाँ पे शिफ्ट करना है मुझे? 70 पे. तो आई हैव टू राइट डाउन 87.5 माइनस 70.83. Now this method you can every time use. तुम्हें अगर ये कहाँ से कहाँ पे डिस्टेंस माइनस करना है, ऐड करना है, कंफ्यूजन होता है, तो जो तुमने सेंट्रॉइड्स में लिया है ना, उसमें से तुम्हारा जो फाइनल y बार आता है उसको माइनस करो. You will get the answer correctly. देखो मेरा सेंट्रॉइड इधर मैंने इसका फर्स्ट सेक्शन का सेंट्रॉइड लिया था 75 और फाइनल आंसर है 70. दोनों को माइनस किया मैंने. इसका ये था 87.5, उसमें से 70.83 माइनस किया. You will exactly do the same thing. If you don't try to imagine or have difficulty in imagining that, you can directly calculate according to this. Now give me the answer for this. Give me the answer. 25.58 into 10 raised to 6. 25.58 5.58 into 10 raised to 6. Right? This is correct. Okay. So inertia we got. Now what next? What we can do? अभी inertia तो मिल गया. अभी आधा problem, आधा नहीं, only 20% of the problem is solved. If this problem comes for 10 marks, here you will get at least 2 marks for calculating inertia, 1 mark, and for calculating y bar, 1 mark. So that 2 marks you have got, 20% you have solved. Now remaining is 40-40. We have 2 cases in this, so that's why 44 marks for each case will be divided. So now how to solve?
फॉर द रेजिस्टेंस हाउ बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है मुझे। तो बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी आई डोंट नो कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट क्या हो, तो पहले एक केस लेंगे पॉजिटिव सैगिंग। सो लेट अस टॉक अबाउट सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। फॉर सैगिंग दैट इज पॉजिटिव मोमेंट, फॉर सैगिंग मोमेंट, सैगिंग मोमेंट अगर मैंने लिया तो ऊपर के साइड पे क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, नीचे के साइड पे क्या होगा? टेंशन। इज इट नॉट? बराबर ना? ऊपर के साइड पे कंप्रेशन, नीचे के साइड पे टेंशन। सो फॉर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट व्हाट विल बी माय YC मैक्सिमम? 79.13, right? And what will be my YT maximum? तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे आएगा नीचे, जिसका डिस्टेंस कितना है? 70.83 फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इट इज 79.17। अच्छा 17 आएगा क्या? ठीक है, हाँ या 17। हाँ ओके, ये समझा सबको कैसे लिया मैंने डिस्टेंसेस? बिकॉज आई नो दैट कि अगर सैगिंग होगा तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, सो आई विल टेक द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ व्हाट इज माय फॉर्मूला? What's my formula says? My formula says that कि sigma by y equal to m by I. I know that कि sigma by y जो होगा वो होगा m by I की तरह, बराबर ना? पर जो भी मोमेंट आएगा ये कांस्टेंट, मोमेंट तो कांस्टेंट है, ठीक है, इनर्शिया भी कांस्टेंट है, बराबर ना? मोमेंट कांस्टेंट, इनर्शिया कांस्टेंट, तो मतलब सिग्मा बाय y क्या रहेगा? रेशो सेम रहेगा। मतलब मैं ये सिग्मा c by yc लिख सकता हूँ, और else I can write down this as sigma t by yt। मतलब अगर टेंसाइल स्ट्रेस फाइंड करना है तो टेंसाइल का डिस्टेंस लो, कंप्रेशन का फाइंड करना है तो कंप्रेशन का डिस्टेंस लो। तो अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो आई कैन हैव वन रिलेशन बिटवीन देम। व्हाट इज द रिलेशन? आई नो दैट नाउ सिग्मा सिग्मा टी मैक्सिमम, सिग्मा टी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, ये रिलेशन से मैं लिख रहा हूँ, इट इज इक्वल टू YT मैक्सिमम अपॉन YC मैक्सिमम इनटू सिग्मा C मैक्सिमम। कैन आई राइट डाउन दिस वे? प्रोपोर्शन में होगा ना ये? हाँ, तो अभी मुझे वैल्यूज पता है ना YT और YC का। कितना है YT? 70.83, बराबर, बराबर ना? एंड YC कितना है? 79.17। दैट इज इक्वल टू सिग्मा T मैक्सिमम एंड दिस इज इनटू सिग्मा C मैक्सिमम। ओके, if you don't write maximum word that is absolutely fine, we are talking about maximum only। ठीक है, तो तुमने अगर maximum word नहीं लिखा हर बार तो भी चलेगा, we are talking about maximum only। yeah, sigma t is equal to this। so can you get one relation? इसको डिवाइड करके कुछ पॉइंट्स में डिजिट आएगा, कितना आएगा? 0.894। 0.894, वेरी गुड, 0.894 सिग्मा c टाइम सिग्मा t। मतलब ये रिलेशन है दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री। ओके, बट नाउ वी नो दैट कि हमें पता है कि मैक्सिमम टेंशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यूज मुझे पता है। सो लेट अस टेक, अगर ऐसा होता है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सिग्मा c का वैल्यू मतलब मैं ये बीम यूज करा। अभी देखो ये 25 एंड 90 वैल्यूज ये है मैक्सिमम पॉसिबल द बीम कैन सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि बीम में 25 MPa और 90 MPa एक साथ रीच होगा। आई अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर आल्सो। सो वी विल अज्यूम वन थिंग एंड वी विल चेक अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है दैट इज फाइन, अगर नहीं करता है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। लेट्स सी। सो लेट अस अज्यूम दैट कि सिग्मा c का वैल्यू जो है वो 90 है। सिग्मा c का वैल्यू कितना है? 90 MPa। तो वो टाइम पे सिग्मा t का वैल्यू कितना आएगा एज पर माय दिस रिलेशन? 80.5 0.894 into 90 अगर करूंगा तो कितना आता है? 80.519। 80.519। अच्छा 552 जो भी है, जो सेटिस्फाई नहीं करता। इज इट ग्रेटर देन 25? तो ये ग्रेटर देन 25 है ना, राइट ना? सो इट इज नॉट सेफ, इट विल फेल। मतलब अगर ऐसा मैंने यूज किया और मैंने मेरे मटेरियल को कंप्रेसिव स्ट्रेस 90 तक स्ट्रेस किया तो उसके पहले ही वो टेंशन में फेल होगा, राइट ना? अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेस 90 का यूज करता हूँ, मतलब मैं बेंडिंग मोमेंट इतना दे रहा हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आ रहा है? 90 MPa का, तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना आएगा? 80 का, विच इज बियॉन्ड इट्स लिमिट, वो फेल होगा।
तो हमें ये नई कंडीशन चाहिए. तो what I need to do is then I'll have to go for sigma t as 25. Then take sigma t as 25 MPa and calculate sigma c का वैल्यू. कितना आएगा sigma c का वैल्यू? 27.94. 27.94. Is it less than the permissible value of 90? Yes. So this is a safe condition. ठीक है. तो मेरे सैगिंग केस में मैं कितना स्ट्रेसेस देना चाहता हूँ मटेरियल पे? टेंसाइल स्ट्रेस में देना चाहता हूँ 25 का, बट सिग्मा सी कितना आएगा वो टाइम पे? अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री रिलेशन सिग्मा सी आएगा 27.95 एंड बोथ ऑफ देम आर बिलो द सेफेस्ट लिमिट गिवन. both of them are given below the material का जो safe limits given है उसके नीचे. So therefore this is a safe condition, and for this condition now I will be calculating the bending moment. So what is my bending moment? So my bending moment now it will be equal to sigma by y into I. Now whether you take sigma c या sigma c लिया तो yc लो, sigma t लिया तो yt लो, तुम्हें जो लेना है वो लो, inertia से multiply करो and get the moment value. Give me the moment value here. How much? Yes. कितना? into 10 raised to 6. 9.03 into 10 raised to 6. 9.03 into 10 raised to 6 Newton millimeter. Newton millimeter. Now let us solve the same problem again. ये पूरा चीज जो हमने किया यहाँ पे वापस से करेंगे for hogging. So for hogging or the negative moment. Okay. For hogging or the negative moment. अभी नेगेटिव मोमेंट के लिए किया तो नेगेटिव मतलब उल्टा, तो मतलब ऊपर टेंशन आएगा नीचे कंप्रेशन. तो मेरा yt क्या रहेगा? मेरा yt रहेगा 79.17 mm, राइट ना? एंड yc कितना रहेगा? 70.83. कितना? 70.83. हाँ, लोग ध्यान ही नहीं रखते हम लोग ओपन है कि नहीं. या तो 70.83 mm. ओके. तो yt एंड yc आ गया 70.83 mm. So now what next? अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? वापस से I know the relation now. अभी ये वापस से ये relation पता करने की जरूरत नहीं. We have already done. So we know that sigma t must be what? Yt by yc into sigma c. But yt yc का वैल्यू चेंज हो चुका है, तो ये डायरेक्ट वैल्यूज नहीं ले सकते हम, ये वैल्यू रिलेशन लेना पड़ेगा. ठीक है, वैल्यूज चेंज हुआ है. तो yt का वैल्यू है अभी 79.17 एंड yc का वैल्यू है 70.83 and into sigma c. So can you give me the value? Sigma t और sigma c का रिलेशन कितना आएगा? 1.11. 1.117. 1.117. 1.117 sigma c, that is equal to sigma t. According to this relation now I want to check. So now let us check that sigma t को 25 लेके चेक करो. sigma t अगर मैंने 25 MPa लिया तो मेरा sigma c कितना आना चाहिए? So according to this relation 1.117 multiplied sorry उल्टा लिखा मैंने. sigma c कितना आएगा? 22.38. So that is 25 divided by 1.117, right? Now it is 22.38 and it is lesser than the value which is given as 90 MPa. So therefore it is safe condition. अगर ये safe condition है तो now you calculate the moment. The moment can be, you can write down anything, sigma t upon yt into I या फिर sigma c upon yc. तुम्हें जो लिखना है वो लिखो. सेम वैल्यू आएगा. कितना आएगा आंसर? Yes. (7.23 into 10 raised to 6). 7.23 into 10 raised to 6 MPa. Sorry, MPa नहीं, Newton millimeter. Have you understood this problem? Sir, can you just please explain the sagging positive movement just once again? I was not able to get it complete. Okay, sagging positive.
सैगिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है? सैगिंग ऐसा होता है तो ऊपर कंप्रेशन नीचे पॉजिटिव टेंशन। मूवमेंट सर, दैट आई गॉट। हाँ, तो अभी YT मतलब मैंने क्या पता चला कि अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ सैगिंग के केस में, तो ऊपर आएगा कंप्रेशन, नीचे आएगा टेंशन। यस सर। ऊपर आएगा कंप्रेशन, नीचे। तो मैंने ऊपर वाला जो डिस्टेंस है 79 उसको YC बोल दिया, और नीचे वाला जो डिस्टेंस है उसको YT बोल दिया। नाउ आई नो द रिलेशन, ये रिलेशन मेरा है सिग्मा अपॉन y इक्वल m बाय i। तो मैं YC लिखता हूँ तो सिग्मा C लिखना पड़ेगा, और YT लिखता हूँ सिग्मा T लिखना पड़ेगा। बट ये तो कॉमन है ना, मोमेंट और इनर्शिया तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। बीम आई एम नॉट चेंजिंग एंड आई एम नॉट चेंजिंग द मोमेंट, सो देयरफॉर इनका रेशियो अगर मैंने निकाला तो मुझे मिलता है कि YT इज दिस, अगर सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिलता है कि सिग्मा T का वैल्यू शुड बी 0.894 टाइम्स सिग्मा C फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इफ इट इज अंडरगोइंग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो देयरफॉर ये रिलेशन अगर मुझे यूज करना है तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास दो मटेरियल, मतलब मेरे पास मटेरियल है, इसका दो वैल्यूज है, मैक्सिमम पॉसिबल टेंसाइल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस। बट दैट डोंट मीन दैट कि मटेरियल में दोनों स्ट्रेस एक साथ रीच करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल आइदर फेल इन टेंशन और इन कंप्रेशन, नॉट बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कभी होगा जब दोनों स्ट्रेंथ वैल्यू सेम है। तो अभी तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है, तो देयरफॉर मटेरियल फेल ड्यू टू एनी वन ऑफ द वैल्यू। So let's check कि अगर मैंने वैल्यू सिग्मा C का 90 वैल्यू लिया, तो at that sigma C according to my relation what should be sigma T? So according to my relation sigma T comes out to be 80.519, but it is beyond my value which is given. What the problem statement says that ki if you are going beyond 25 MPa in tension you are going to fail the material. So therefore 80 point में जा ही नहीं सकता, it's too beyond it. So therefore I understood that कि ये wrong है, मतलब मैं मेरा मोमेंट ऐसा मोमेंट में दे नहीं सकता कि जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस 90 रीच करे, तो मुझे कम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, उल्टा किया, सिग्मा T को 25 लिया एंड सिग्मा T को 25 लेके सिग्मा C का वैल्यू कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू रिलेशन व्हिच आई गॉट। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई गॉट 27 पॉइंट समथिंग व्हिच इज द वे बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट, दैट इज फाइन। तो मैक्सिमम लिमिट सिग्मा कंप्रेशन में जा ही नहीं रहा, कंप्रेशन का 90 वैल्यू है, यू कैन गो अप टू 90 बट यू कैन नॉट, यू आर गोइंग अप टू 27। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर इन ट्राइंग टू, मतलब तुम बोलोगे कि सर उसका तो 90 MPa स्ट्रेस था, तुमने तो खाली 27 दिया, मतलब हमने बहुत मटेरियल ज्यादा यूज किया। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मटेरियल ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल देखो, टेंसाइल उसने 25 तक पहुंचाया है जो मैक्सिमम लिमिट है। अगर मैं थोड़ा सा भी कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ाता हूँ बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट, अगर मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस थोड़ा सा भी बढ़ता है तो कंप्रेशन में नहीं टूटेगा बीम, बट टेंशन में टूटेगा, वो नीचे वाले टेंशन फाइबर्स पे क्रैक आएगा। So I don't want beam to break any of the cases, tension as well as compression. So therefore दोनों condition satisfy करना जरूरी है. Okay? And that is what we have done. सर वो वैल्यू रॉन्ग है, लास्ट वाला वैल्यू 8.08 आएगा। कितना उसने है ये? YC का डिस्टेंस गलत लिया, लास्ट वाला। ये हाँ 8.08 आएगा। I am not responsible for the values. Okay, fine. Thank you. So let's continue now. Have you understood this one as well? Yes sir. So let's go. Yeah. So now the question is about ISMB 500 and channel ISMC 250 are to be used in a combination. Achha, what do you understand by this question? Can anybody tell me what is asked? What to do? Can you at least give me the flow? कैसे करना है? Yes. Anyone? जरा voluntarily आ गया और बताओ कुछ. Yes. Nobody knows. क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में आ रहा है? सर सिग्मा C और सिग्मा T कैलकुलेट करना है। सिग्मा C और सिग्मा T कैलकुलेट करना है, ओके? हाँ, बट अभी उसके लिए अभी ये सिग्मा C सिग्मा T कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा काम नहीं है। यहाँ पे ज्यादा काम किस पे है? इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इनर्शिया ऑन y max। हाँ, तो कैसे करेंगे? So see here, they have given some standard values. ISMB 500, ISMC 250, these are the nomenclatures. कि अगर तुम देखो, जैसे हम लोग नट एंड बोल्ट के लिए नोमेनक्लेचर रखते हैं M10, M12 मेट्रिक सिस्टम में, ठीक है? तो सिमिलरली ये सब का नोमेनक्लेचर होता है चैनल्स का। मतलब व्हेन आई गो टू द परचेसर एंड उसको मैं बोलता हूँ कि ISMB 500 चैनल चाहिए, तो उसका ये जो डेटा है ना वो सब फिक्स्ड है, नोबडी कैन चेंज दिस डेटा,
ठीक है, उसके लिए उसका नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि ISMB 500 चैनल चाहिए। ISMB स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम स्केल बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है। तो मीडियम मतलब ज्यादा हेवी वेट नहीं है, मीडियम चैनल है, मीडियम बीम है, इसलिए 500। एंड वो सी सेक्शन के लिए उसको चैनल बोला, इसलिए ISMC लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। उसका वैल्यू, उसका नंबर 250 दिया है। ये 250 नंबर उसके ओवरऑल डेप्थ के साथ रिलेटेड है वो। यू कैन सी हियर फॉर आई सेक्शन जो दिया है मैंने, जो येलो हैचिंग में करके रखा है, दिस इज माय आई सेक्शन। ये आई सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो लोग ने क्या किया है, ऊपर एक चैनल को वेल्ड कर दिया है। यू कैन सी द ऊपर वाले फ्लांज पे चैनल को वेल्ड कर दिया, तो और ज्यादा उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब ये कितना स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद वो बेंडिंग मोमेंट कितना सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ऑफ 203 किलो न्यूटन मीटर, एंड देन यू फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस फॉर द सेक्शन, मैक्सिमम कंप्रेसिव एंड मैक्सिमम टेंसाइल। तो वो तो ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव मैक्सिमम टेंसाइल यू कैन फाइंड आउट, बट द प्रॉब्लम हियर इज हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, एंड बिफोर दैट हाउ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट y bar और the neutral axis कहाँ पे आएगा। See here so many data is given in this problem. What is given for I section? They have given the entire area of cross section. Area of cross section हमें पता है कितना है, 11074 mm square, ठीक है। The IXX, what do you mean by IXX and what do you mean by IYY? Moment of So inertia I-axis about is the x-axis, inertia along x-axis direction. So Yes. there is a plane, मतलब जो एक mark होता है ना, that x from x dash उस type से, the x axis actually. Horizontal axis. Yes, a minute. Okay. हाँ, तो ये IXX मतलब ये जो इनर्शिया है, ये आई सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। उसने वो सी सेक्शन कंसिडर नहीं किया, एंड ये जो इनर्शिया दिया है वो सी सेक्शन का इनर्शिया है, समझा। वो किसका इनर्शिया है, सी सेक्शन का है। तो अभी हाँ ठीक है, फिर अभी कैसे करेंगे, मतलब क्या स्टार्ट कैसे करूँ, कहाँ से, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हाउ टू डू इट। मुझे टोटल इनर्शिया फाइंड करना है, उसके पहले तो पहले मुझे न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना पड़ेगा, because I am going to find out inertia about neutral axis, not these inertias which are given here. So first of all, let us find out the position of neutral axis. Okay, so let us find out position of neutral axis. Okay, so for that neutral axis का position find करने के लिए what are the things given? एक तो I section का centroid हमें पता है क्या, तो I section का centroid तो उसके center पे होगा, that we already know. See here, पहले dimensions लिख देते हैं, क्या क्या dimensions मुझे पता है। See here, the thickness of the flange is given, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है thickness of flange is, ये कितना है 17.2, right ना, oh sorry not thickness, गलत लिखा मैंने, thickness of the flange means ये thickness, right, this thickness of the flange is 17.2, ये distance है हमारा 17.2, और ये distance कितना है, this is thickness of flange for sorry thickness of web for C section, ये C section का web है, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे कितना दिया है 7.1, so I'll have to write down this as, ये arrow निकाल देता हूँ, थोड़ा सा लिखता है 7.1 distance है ये, vertical distance 7.1. ओके, अभी देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, so that is the overall depth for I section. How much? 500 ना, वो दिया है 500 दिया है,